Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our legal matters. Again, we'll be discussing legal issues. So if you've got any legal issues regarding immigration, litigation or representation, so you know where to call. अगर आपके पास कोई कानूनी मशवरा चाहिए या आपको किसी से बात करना है कानूनी issues के मुताबिक immigration या कोई भी issue, we'll be more than happy to discuss your questions. As usual, हमारे साथ हमारी team होगी. Syed Mansoor Saab will be joining me. He'll be discussing the immigration side. And obviously Raj Chopra Saab, who will be discussing about the litigation and criminal law. So Raj, welcome to the program. Thank you very much. Okay, and as usual, you have a potentially of vast experience working in this field of criminal law litigation for the last 12 years. Yes. So आपको obviously ये काम तो नया नहीं है, आपके पास experience है, you're competent, you're an advocate. Yeah. हम अपने viewers को ये बताना चाहते हैं that obviously if they have an issue regarding litigation or criminal matter, then they can call us. Yes. तो viewers से हम यही कहेंगे that अगर आपके पास कोई issue है regarding litigation या criminal matter भी हो सकता है like VAT or anything like that, then we're more than be happy to discuss your issues. और off air भी हम आपके साथ discuss कर सकते हैं because हमारे जो यहाँ पे जो studio में off air भी ले सकते हैं आपकी details and we can discuss it with privacy. अगर आप चाहते email देना, we can take your emails and we'll be more than happy to discuss with you your relevant questions. Raj, I want to ask you first of all relation to police station. So police station में होता है when somebody gets arrested, तो basically उनकी जो rights होती हैं वो basically हम ये चाहते हैं बताना, तो क्या rights होती हैं अगर somebody gets arrested? सबसे पहला तो right ये है कि they have a right to inform somebody कि वो person arrest हो गया and साथ में most important जो right है कि उस person को free and independent legal advice मिल सकती है. वो अपने वकील से personal मशवरा कर सकता है. अगर अपना personal नहीं है तो वो जो sergeant होता है who's looking after him वो arrange करेगा. duty solicitor जो वो भी independent होते हैं free advice देंगे. फिर उसके बाद procedure होता है कि that person will be interviewed etc. So उनके basic दो right हैं कि free and independent legal advice, secondly to inform somebody कि वो arrest हो गए. ठीक है. चलें आपसे अभी बात करूँगा, इस डिस्कशन होती रहेगी इन आवर प्रोग्राम. हमारा पर्पस ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम रहेगा. तो राज आपसे डिफरेंट एरियाज़ पे बात करेंगे. शाहिद साहब, obviously we've been talking about a number of issues in the past and again we talk about personal injury and इसके बारे में हम यही बताना चाहते हैं. We're here to speak to them, you know, and help them. तो थोड़ा सा आप उसे explain कर दें what can be done. पर्सनल इंजरीज़ के बारे में हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि हम उनको उनकी ज़बान में जो है लीगल एडवाइस दे सकते हैं, कानूनी मशवरे. अगर उनका कोई लास्ट 3 इयर्स में कोई स्लिप ट्रिप या रोड एक्सीडेंट हुआ है और वो उनका फॉल्ट नहीं था तो उनका पोटेंशियल क्लेम है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. और अगर वो हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको मैक्सिमम कॉम्पनसेशन दिलाने की कोशिश करेंगे इन अ मिनिमम ऑफ टाइम. शुक्रिया शाहिद साहब. अभी आपके पास कंटिन्यू करेंगे, कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. वेलकम टू द प्रोग्राम. आप अपना नाम बताएंगे? जी खुर्रम साहब. वेलकम खुर्रम साहब. आप अपना क्वेश्चन पूछ दें हमें. जी, खुर्रम से बोल रहा हूँ सर. मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो है 2008 में मेरे भाई ने क्लेम किया था अपना ह्यूमन राइट्स का. ठीक है. तो उसकी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आई थी. जी बात करें आप. जी उसका सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आई थी तो आज तक कोई फैसला नहीं आया. ठीक है. तो फिर लास्ट जो सितंबर में हमने जो है वो दोबारा एप्लीकेशन कर दी थी. जो 28 दिन का इन्होंने कानून बनाया था कि जी वो 1 अक्टूबर 2012 में. ठीक है. तो वो जो हमने फिर दोबारा एप्लीकेशन में तस्वीरें भेज दी. फिर उसका अभी तक कोई फैसला जवाब नहीं आया. फिर 3 महीने पहले मैंने जो है वो रिमाइंडर भेजा, फिर उसका कोई जवाब नहीं आया. 5 साल हो गए जो केस को, तो अभी तक कोई फाइनल नहीं आया. वो बैकलॉग केसेस वगैरह जो हैं, तो उसके बारे में प्लीज जरा डिटेल बता देंगे कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए हमें. ठीक है, शुक्रिया. आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गया. प्रोग्राम वॉच करते रहें, इंशाल्लाह आपको इसी प्रोग्राम में जवाब दे दें. शाहिद साहब, ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस यही कर रहे थे पर्सनल इंजरी का. तो आपने यही बताया था वी कैन हैंडल देम केसेस, वी कैन स्पीक इन द लैंग्वेज दे फील मोस्ट कंफर्टेबल इन. तो ये
अगर किसी के पास कोई केस है तो हमें कांटेक्ट करें, वी बी मोर देन हैप्पी. तो व्यूज़ आपसे यही होगी नाज़रीन, अगर आपके पास कोई पर्सनल इंजरी का ट्रिप और स्लिप का हो, वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. अगर आपके पास होगा इशू रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट लॉ, वी बी मोर देन हैप्पी टू टेक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. और आपका जो होगा ना जो इश्यूज होंगे, वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. शायद want to talk about the new rules जो अभी आने वाली हैं और in the October 31st में, you know, 28th of October actually. 28th exactly. New rules. Just briefly. काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो main जिनका लोगों को मालूम भी होगा is to do with the knowledge and the language requirement. उसमें ये है कि लाइफ इन यूके टेस्ट जो है वो चेंज हो गया था. द न्यू जो हैंडबुक है from the 25th of March of this year, all the life in UK tests has been carried on under the new rules. ठीक है. और अक्टूबर में एक और जो चेंज आ रही है वो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की है कि उसका जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड होगा इट वुड बी लेवल B1 और हायर ऑफ यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. तो दैट्स द टू की चेंजेस. उसके अलावा भी काफ़ी चेंजेस हैं, बट जो ज़्यादातर जो लोगों को इफ़ेक्ट करेगी वो ये लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज और लाइफ इन यूके टेस्ट की रिक्वायरमेंट. अभी कॉल आ रही है, शामिल कर दें. हेलो जी, कौन कहाँ से? मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान खान बोल रहा हूँ जी. वालेकुम सलाम सलमान साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम. जी आप अपना क्वेश्चन करें. मैं क्वेश्चन है जी, मैं 1986 में आया था. Okay. और 88 में मुझे इंडेफिनेट वीजा मिल गया था जी. और मेरे सारे बच्चे यहाँ पैदा हुए थे. Okay. उसके बाद में 1994 में मैं तक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस किया. उसके बाद मेरी डिसेबिलिटी हो गई और मैं मेंटल हॉस्पिटल में 20 साल रहा हूँ. अब मैं मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज हुआ. एम आई एंटाइटल्ड टू ब्रिटिश नेशनैलिटी? Or my wife had indefinite stay for a long time, and all my children are British. But since I came out of mental hospital, can I apply for British nationality or not? Because I'm on a disability, living in the lounge, and would that make any difference? Please explain. Thank you very much. Okay, शुक्रिया सलमान साहब. की वॉचिंग प्रोग्राम जवाब देंगे, कोशिश करेंगे सबका. जितने भी कॉलें आ रही हैं, लास्ट वीक हम अपोलोजाइज़ करते हैं, माजरत करते हैं, बहुत सारी कॉलें आ रही थी, वी couldn't take him. तो अगर आप क्वेश्चन टू द पॉइंट रखेंगे, विल ट्राई टू हेल्प. कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल लें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी एडवाइस दें. थैंक यू वेरी मच. शायद ऑब्वियसली वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो कॉल जो है या तो ये बताइए, कॉल जो है होम ऑफिस ने लिखा है, कॉल बेसिकली इज अ शॉर्ट टर्म. मैं अभी आपके पास आता हूँ, कॉल आ रही से ले लेते हैं बिकॉज फिर हमारा शॉर्ट टाइम होता है. जी कौन कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मैंने एक बात पूछनी थी. मेरा 1 साल हो गया है, फर्स्ट में मेरा हाथ आ गया था, तो मैंने केस किया था. ये टीवी पे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी करती है, अब उनका नाम नहीं मैं लेती, आप समझ आना, जो बहुत एडवर्टाइज करते हैं. 1 साल रख के उन्होंने मेरा केस ना टामाटोल करते थे. कभी कहते थे थर्ड पार्टी, वो कुछ पूछती है. तो इतने में मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया, तो मैंने केस ना स्टॉप करा दिया. तो उन्होंने फिर पेपर भी भेज दिए कि हाँ हमने तेरा केस स्टॉप कर दिया, तुम किसी और को ना अपने ना फाइल मंगवा लेना. तो अभी ये है कि मैं जहाँ भी फोन करती हूँ तो मेरा कोई केस लेता नहीं है. तो अब मुझे क्या करना चाहिए प्लीज? आप अपना नाम तो बताएं ना, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शबनम है. तो मैं टीवी बंद करूंगी तो फिर आप कल सुनूंगी कि आप तो मुझे बताओ कि मैं जहाँ भी फोन करती हूँ तो उनका मतलब होता है कि जी आधा फिर उनको देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. तो प्लीज इसलिए कि मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ केस. तो कब से आपका? 1 साल हो गया, मैंने ना उनसे वापस ले लिया हुआ अपना. तो अभी मेरा 1 साल और रहता है, तो मुझे आप एडवाइस दो कि मैं क्या करूँ. तो आपने ये केस अपने वकील से ले लिया वापस, आप ये कह रहे हैं लास्ट ईयर? ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया, शुक्रिया. डोंट वरी, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन विद इन द प्रोग्राम. ये कॉल का बता रहे थे शायद. कॉल इज जस्ट एन अब्रीविएशन फॉर नॉलेज ऑफ लाइफ इन यूके एंड लैंग्वेज टेस्ट. ठीक है, थैंक यू. एक कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? अली बोल रहा हूँ जी, लंदन से. मेरा क्वेश्चन था, मैं टियर 2 पे ना यहाँ पे हूँ,
تو جو میری مسز تھے وہ آئی تھی 2011 میں نا اسٹوڈنٹ ویزا پہ. ایکچولی جب ہماری شادی ہوئی تھی نا تو اس کے فوری بعد ہی ان کا اپلائی کیا ہوا تھا, لیکن مین وائل ان کا اسٹوڈنٹ ویزا آ گیا تو وہ یہاں پہ آ گئے. یہاں پہ آنے کے بعد وہ پھر کالی کنٹینیو رہا تقریباً 6 ماہ تقریباً ان کا نا 6 ماہ 1 سال. تو اس کے بعد وہ بیبی کی برتھ ہوگی اور اب ہمارے 2 بیٹے ہیں تو ان کا جو ویزا ہے نا وہ 2014 تک کا ہے. تو اس کے بعد وہ ایکچولی اسٹڈی پہ اپنی کنٹینیو کر سکیں. اور جو بچے ہیں نا یہاں پہ ہمارے دونوں بچے یہاں پہ بورن ہوئے ہیں. میرے پاس ٹیئر 2 ہے, میں جہاں پہ کام کرتا ہوں انہیں سے مجھے ملا ہوا ہے. تو اگر میں ان کے لیے ڈیپینڈنٹ اپلائی کروں تو یہیں سے کر لوں یا پاکستان سے کرنا بہتر ہوگا؟ اچھا, اب یہ کہ اگر وہ بچے یہاں سے واپس جاتے ہیں, جیسے یہ ایئرپورٹ وغیرہ پہ چیک کرتے ہیں نا آپ, وہ جاتے ہوئے لوگوں کو بھی چیک کرتے ہیں, تو کیا وہ ان سے کوشچن کیا جا سکتا ہے ابھی ان کے پاس ویزا نہیں ہے؟ یہ جو بچوں کی عمر کیا ہے؟ ایک بیٹا جی 2 سال 2 ماہ کا ہے اور ایک 2 ماہ کا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ علی صاحب کی واچنگ پروگرام. جواب دیں گے انشاءاللہ, پروگرام دیکھتے رہیں, کوشش یہ ہوگی آپ کا جواب ملے گا پروگرام میں. اوبویسلی شاید ابھی آپ نے کال کا مینشن کرا تھا, ایکسپلین دا نالج آف لینگویج ان لائف ان یو کے ٹیسٹ ہوتا ہے, سو دیٹس امپورٹنٹ. تو اوبویسلی یہ سختی ہو رہی ہیں, نیو رولز ناٹ میکنگ اٹ ایزی. اور ڈیفیکلٹیز یہ ہے جو اب جو گیسٹ بھی آ رہے ہیں وزٹرس, ان کے بھی انہوں نے ڈیفیکلٹ بنا رہے ہیں ود دا بانڈ اسکیم. جی ہاں بالکل. obviously یہ بانڈ کا جو انہوں نے ڈال دیا وزٹر بانڈ, تو اس کی اماؤنٹ جو انہوں نے رکھی ہے, وی مینشن پریویسلی, کین یو جسٹ ریمائنڈ دا ویوز جو ہم نے بتایا تھا انہیں. وزٹر ویزز کا یہ ہے کہ پہلے تو جو رائٹ آف اپیل تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا. سو ان دا پاسٹ جب کوئی وزٹر ویزے کے لیے اپلائی کرتا تھا تو اور کلوز فیملی ٹائز ہوتے تھے تو ان کو ایک رائٹ آف اپیل ہوتا تھا. تو سب سے پہلے تو انہوں نے وہ رائٹ آف اپیل جو ہے ریموو کر دیا یو کے بی اے نے, اور اب انہوں نے ایڈیشنل جو ریکوائرمنٹ لگائی ہے لوگوں پہ, اسپیشلی پیپل فرام ایتھنک مائنارٹیز فرام افریقہ اور دا سب کانٹیننٹ, کہ اگر آپ کا کوئی وزٹر آ رہا ہے تو فرام نومبر آن ورڈز یو ول ہیو ٹو پٹ سیکورٹی بانڈ آف £3,000 پر پرسن. شاہد صاحب تھینک یو, کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ ہاں میں غضنفر صاحب ایلفنٹ سے. جی غضنفر صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. ہیلو السلام علیکم. میرے پاس میری وائف ہے افغانستان میں, اور مجھ کو انگلینڈ لانا ہے ان کو. مگر انگلینڈ میں بھی ایک وائف ہے. سوری, آپ کی وائف یو کے میں بھی ہے؟ ہاں میرے پاس 2 وائف ہے, مگر دوسری والے کو انگلینڈ لانا ہے. اور لوئر سے میں نے گیا, انہوں نے بولا یہ نہیں ہو سکتا. میں سوچ رہا ہوں یہ کچھ ہیومن رائٹ کچھ نہیں ہو سکتا. میرے پاس 4 لڑکے وہاں بھی ہیں, انگلینڈ میں نہیں بلا سکتا. غضنفر صاحب تھینک یو, آپ کو ہمارے پاس کوشچن آ گیا ہی, ڈونٹ وری, آپ کو جواب مل جائے گا. کی واچنگ پروگرام, شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. راج, obviously I'm going to come back to یہ آپ سے سوال کرنا ہے. obviously ابھی ان کا جواب دے بھی سکتے ہیں اسی میں غضنفر صاحب کا. یو کے کا law is only marriage registered only for one wife. تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گے تو obviously we can کیونکہ اسلام میں آپ 4 شادیاں کر سکتے ہو provided جو ہم ان کو پروو کریں کہ they can support them. I think it is possible. She is legally married and if اگر یہ برٹش سبجیکٹ ہے یہاں پہ رہتے ہیں تو اسپاؤس اپلیکیشن بنانی چاہیے اور ان کو ویزا گرانٹ ہو جائے گا. Even though he's already got a wife in Afghanistan. UK. ہمارے یہاں پہ رائٹس مانے جاتے ہیں, ہمارے اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں, تو that he's got second wife. شاہد صاحب on this question, غضنفر صاحب کا میرا سٹانس یہ ہوگا کہ the British law prevails over any Islamic law because we are subject to the British rule, and under the British rule you're only allowed to have one wife at a time. But what he can do is to have the other wife over here on some kind of another visa. Spouse visa won't be allowed, unfortunately, because under the British law you only allowed to have, unless he divorces his wife, which I don't think he wants to do. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو ایز اے ڈپینڈنٹ
شو کریں کہ شی از فائنینشلی ڈپینڈنٹ اینڈ یو ہیو سم کائنڈ آف اے ریلیشن شپ. اگر آپ وہ کہیں گے کہ جی میرج ہے تو دین دیٹ ول کاز پرابلم. بٹ ایز اے ایکسٹینڈیڈ فیملی ریلیٹیو وغیرہ اگر یہ اٹ از ناٹ اسٹریٹ فارورڈ. put it this way, under the normal rules it will not be allowed. جی بالکل ٹھیک ہے. میرا تو یہی ویو تھا کہ ہم الاؤڈ ہیں 4 شادیاں کرنے کے. نہیں 4 شادیاں الاؤڈ ہیں in Islamic country but under the British rule the British rule prevails over any other. I think this is the British law and they will not recognize even though here but they don't recognize. I think the UK Islamic law divorce تو recognize کرتے ہیں. I think Islamic divorce has to be اگر آپ کی شادی ہو گئی registered, you still need to get decree of nisi جو دیا absolute جو دیا from the courts as well. You're right Raj, آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں. Your fair points you made, but we're stuck with the British law as it were. Okay, Raj صاحب آپ سے مجھے بات کرنا تھی. Obviously یہ جو بیل ہوتی ہے نا اس میں ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ Just coming back to the police station work جو ہم بات کر رہے تھے پہلے. جب پولیس کسی بندے کو اریسٹ کرتی ہے اس کے بعد انٹرویو کرنے کے بعد they seek CPS advice. Is there enough evidence to charge him? If not, they will bail him pending further inquiries. And then they may put conditions, you know, for he may interfere with the witnesses or he will not come to answer bail, etc. تو وہ بڑی ساری کنڈیشنز لگا سکتے ہیں. but it depends کس قسم کا کیس ہے, کیا کرمنالٹی کیا ہے, murder, fraud, you know. I mean, how long can I keep somebody in custody? Well, سب سے پہلے جب بندہ اریسٹ ہوتا ہے تو سارجن کین اس کو سسپیکٹ کو صرف 6 گھنٹے تک رکھ سکتا ہے. وہ بھی اف دی گراؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہے ٹو obtain ایویڈنس بائی کوشچننگ. اینڈ اس کے بعد 6 گھنٹے بیتنے کے بعد اگر پھر بھی پولیس نے کو فردر انکوائریز آر آن گوئنگ, دین دی انسپیکٹر ان یونیفارم مسٹ کم اینڈ ریویو اینڈ ہی کین گرانٹ اپ ٹو 9 hours. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اور 9 گھنٹے رہیں گا. اگر اس کے بعد بھی 9 گھنٹوں میں کچھ بھی نہیں ہوا, پولیس اسٹل میکنگ انکوائریز دیٹ دی گراؤنڈ ایگزسٹ فار obtaining ایویڈنس بائی کوشچننگ, then inspector can again come and review, ask the solicitor if he's got any objections, and وہ custody record کے اوپر ریکارڈ کیے جائیں گے. تو 24 hours minimum. Then اگر still ground exists, then superintendent can come and review and give another 12 hours. Then کر سکتے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح 72 hours. ٹھیک ہے, اب ایک کال آ رہی ہے اسے ہم شامل کرتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. راج, ہیلو, کون کہاں سے؟ السلام علیکم جی, میں دوبارہ فون کیا ہے. وعلیکم السلام. میں 87 میں آیا تھا, 86 میں آیا تھا, مجھے انڈیفینٹ ویزا ملا تھا, میرے بچے سارے یہاں پہ تھے. میں سوال کرتا ہوں کہ میں مینٹل ہسپتال میں around 20 years. Please answer my question whether I can apply for British nationality as a mentally disabled on the benefits or not. آپ غضنفر صاحب بات کر رہے ہیں؟ سلمان. Thank you very much. سلمان صاحب, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سلمان صاحب آپ کا تھینک یو فار یور کوشچن. ابھی ہم نے آپ کو جواب ہی نہیں دیا, سو آپ ذرا ویٹ کریں, اب انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا اسی پروگرام میں. تھینک یو فار یور کال. Obviously راج کنٹینیو یہ بات کر رہے تھے, تو you can deal with HMRC issues. یا کوئی کسٹم ایکسائز, انکم ٹیکس, کیا کوئی مسئلہ ہے, VAT کا ہے, any arrest, drink driving, any driving matters, کسی چیز کے road traffic ہو گیا, speeding, کسی چیز کا بھی مسئلہ ہو, ہم اپنے ویورز کو فری ایڈوائس دے سکتے ہیں. ان کو کسی کو کوئی بندہ پریزن میں ہے وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں اینڈ ہیلپ, ان کی ہر قسم کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تھینک یو. ویورز کو یہ بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایشو ہے ریگارڈنگ روڈ ٹریفک انسیڈنٹ بھی ہو جہاں پہ اگر اسپیڈنگ کا ہو یا آپ کو کورٹ بھی جانا پڑ رہا ہے, دین کانٹیکٹ اس. ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہوگا, ہمارے ٹیلی فون نمبر ہے, آپ ہمارے اسٹوڈیو سے بھی نمبر لے سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو ٹاک پرائیویٹلی وی کین ٹیک دیم کالز. راج بیٹھے ہیں, میری ٹیم بیٹھی ہے, ہم سب بیٹھے ہیں, شاید وی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو ان دیز میٹرز اینڈ اینی تھنگ ٹو ڈو ود پولیس میٹرز. اگر آپ کے پاس اور بھی سیریس ایشوز ہیں لائک جیسے راج صاحب نے ابھی بتایا تھا VAT کے بارے میں, وہ بھی کر سکتے ہیں. بزنس ایشوز جو ہوتے ہیں دے ویری سیریس. راج آپ نے لاسٹ ٹائم جب ہم نے ٹچ کرا تھا اباؤٹ VAT fraud جو ہوتا ہے, اگین دس از سیریس ایشو اینڈ اس میں لوگوں کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اینڈ obviously they need to contact somebody to help him and advise him in the legal issues. So can you explain how we can help him?
well, सबसे पहले तो पुलिस में तो जितने भी आप रिच हो या पुअर हो, doesn't make any difference. वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन फ्री ऑफ चार्ज है. पूरा वकील आपको फ्री मशवरा करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, एविडेंस पहले पूछेगा, ऑफिसर इन क्वेश्चन असेस करके आपको एडवाइस देगा, वो सब फ्री है. उसके बाद अगर मसला कोर्ट में जाता है तो हम लीगल एड ले सकते हैं. डिपेंड उनके मीन्स के ऊपर क्या वो काम करते हैं. बिजनेसमैन है तो उनके यू नो circumstances देखें. ठीक. अच्छा राज, आप रिसेंटली माशाल्लाह से डिड अ वेरी गुड केस जहाँ पे attempted murder का था in them kind of issues. आपने उनका बेल निकलवाए इन लोगों की. थोड़ा सा वो बताएंगे without giving the details of the case, but generally how you've helped them, because these are very serious issues. हाँ, मेरा क्लाइंट था, उसको 5 अटेम्प्ट मर्डर केस में पुलिस ने अरेस्ट किया. तो वो इंसिडेंट जब हुआ तो वो फॉलोइंग मॉर्निंग इंसिडेंट 4 बजे सुबह हुआ, तो 5-6 बजे वो बर्मिंघम से चला गया था पाकिस्तान. तो जब वो आया तो अरेस्ट हुआ, तो दैट मेड इट वर्स. तो फिर कोर्ट में जाके हमने बेल कराई उसकी. अटेम्प्ट मर्डर, रेप वगैरह में तो बेल मिलनी बड़ी मुश्किल है. आई मेट एवरी ऑब्जेक्शन उनके प्रोसिक्यूशन के, उसको बेल दिलवाई. फिर उसके 2-3 महीने के बाद वो फिर अरेस्ट हो गया. उसने ब्रीच कर दी अपनी कंडीशंस. फिर उसकी बेल करा. 2 बार हो चुका है and then you got them again, you got bail out. That's remarkable. Well, I met every objection put forward by the prosecution and well, got experience. Usually वो नहीं देते. एक बार breach हो जाए, bail is very serious. And plus वो भाग गया था. Makes it even worse. ठीक है राय साहब, कॉल आ रही से शामिल करते हैं, फिर आपके पास आते हैं दोबारा. जी हेलो. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, वेलकम. कौन कहाँ से? मैं जी बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ, साजिद मेरा नाम है. जी साजिद साहब, ज़रा आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, बिकॉज आपकी बहुत आवाज़ लो आ रही है, सो प्लीज़ ज़रा से ऊंची आवाज़ में बात करें सो वी कैन आपका क्वेश्चन आ जाए. मैं बर्मिंघम से साजिद बात कर रहा हूँ. जी वेलकम. मैंने पूछना था कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे ट्रैफिक ऑफेंस है, 6 पॉइंट्स लगे हुए हैं, पर मेरा इंडेफिनिट स्टे हुआ हुआ है. क्या मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे 3 साल हो चुके हैं इस कंट्री में आए हुए. जी अच्छा, नेशनलिटी के वीजे पे आया था, 2 साल हो गए, 2 साल कंप्लीट हुए इंडेफिनिट स्टे को, और अभी उसको टोटल हो गए 4 साल मुझे यहाँ पर. ओके, ये आपके जो ड्राइविंग ऑफेंस से कब लगे थे, आप फिर से बता दें? टाइम उसका मेरे ख्याल से 2 साल, एग्जैक्ट 2 साल हो चुके हैं, जो 6 पॉइंट्स लगे थे. 6 पॉइंट्स. ठीक है साजिद साहब, आपका क्वेश्चन आ गए, और वी बी मोर देन हैप्पी. अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें कॉल बताएं. अभी वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम. राज, वी जिस अभी यही बात कर रहे थे, आपने बेल दोबारा दिलवा दी. वन इज unusual. I mean, it's very good. So basically, ये जो केस है इस सीरीज, अभी इसका आउटकम तो नहीं हुआ, ये तो ट्रायल पे जा रहा है. ये is now I think it was this case was concluded. No, it's ongoing at the moment. It's still ongoing. Yeah. So obviously, आपसे यही बात थी that we want people to know that we can handle these cases. Yes. You have the expertise, and if people want to call, they can come in and speak to us. जी आपने सुन लिया होगा अभी राज चोपड़ा साहब से, तो अगर आपके पास कोई इशू ऐसा हो ना, सीरियस इशू भी, जहाँ पे आपके कोई लीगल मैटर हो रिगार्डिंग पुलिस और एनी अदर इशू, देन प्लीज कॉन्टैक्ट अस. हमारा एड्रेस आ रहे हैं, ईमेल एड्रेस आ रहा है, टेलीफोन नंबर्स हैं. वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. अभी थोड़ा सा हम ब्रेक की तरफ जाने वाले होंगे, तो अभी ब्रेक के बाद थोड़ा सा बात करेंगे. अभी टाइम है हमारे पास, अभी हम कंटिन्यू करते हैं. शाहिद साहब, आपसे मुझे पूछना था, obviously ये work permit के बारे में थोड़ा सा, obviously these are serious, you know, new changes have come in. Point based system, under the point based system जो new change आई है वो ये है कि अगर आपको कोई employer इधर sponsor करता है for a highly skilled job, तो you should be earning at least £35,000 per annum if you are to then get ILR after 5 years. अगर आपको कोई और जॉब मिलती है और वो अंडर द 35,000 थ्रेशोल्ड है, तो इवन इफ़ यू आर लीगली स्टेइंग हेयर, दैट विल नॉट बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू ILR आफ्टर 5 years. So that's the rule. So basically, it's got to be 35,000. Anybody under the threshold, तो उनका क्या होगा? Those who are just falling short of that 35,000. They'll just have to continue being tier 2 highly skilled migrant. Just keep on extending and renewing the visa. Basically, तो उनका
indefinite leave to remain तो नहीं मिलेगी after 5 years. They have to have that £35,000 per minimum. That's right, yeah. तो obviously जो हमारे जो views हैं अगर वो work permit पे हैं और अगर आप चाहते हैं तो अगर आपका कोई issue हो और if you feel that इस वक्त आप sure नहीं हैं तो please आप हमसे contact करें. We'll be more than happy to help you and advise you with your application. अभी थोड़ा सा touch करते हैं domestic violence पे break के बाद आके फिर discuss करेंगे. अब ठीक है. On the domestic violence side, थोड़ा सी बताएं. First, we want to अपने domestic violence basically what it means is that जब यहाँ पे शादी होके कोई spouse visa पे आता है, generally speaking ladies, but to some extent men can also suffer domestic violence. In the past there wasn't actually a such category, but now there is that अगर आप इधर स्पाउस वीज़े पे आए हैं और आपका मैरिज रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है, इट्स नॉट गोइंग स्मूथली, सो व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंशन then you can put an application under the domestic violence, but you will have to prepare documentary evidence to establish that you've been suffering. So the key is that if you are experiencing domestic violence from very beginning, then you should actually report it to somebody. You should get a social worker involved. You should go and see your GP. You should go and report it to the police. So at least you have registered or logged it as. Okay, हम obviously अपने viewers को ये बताना है किसी के बाद domestic violence का issue है, they can contact us. We'll be more than happy to help them. मगर अगर situation है somebody's been domestic violence, उनकी शादी खत्म हो गई, it's been annulled, finish हो गई, then they want to remarry. तो उनका जो obviously there's going to be an issue with that one because first they've been married, उनका spouse आया था UK में, and now they want to go back and get remarried. Well, before they can remarry, they need to have the divorce decree absolute, you know, to be able to remarry anybody else. While they are still married, the other marriage will not be recognized under the law. So there are some technical problems. जैसे example है, so obviously उन्हें यहाँ की court से भी अपने वो clearance लेना है, marriage dissolve हो चुकी है, and they have to get decree of absolute जो होती है, to give it null and void जो उसका certificate होता है. बोल रहा हूँ पाकिस्तान में भी तो उन्हें लेना पड़ता है ना फिर वहाँ से भी तलाक. हाँ, अब डिपेंड करता है कि उनका निकाह कहाँ पे हुआ था. Obviously if the marriage took place in Pakistan and then subsequently a spouse visa application was submitted, then you will have to get some confirmation from Pakistan as well. ठीक है शाहिद साहब, शुक्रिया. राय साहब, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. व्यूज़ आपको यही अभी आपसे ये कहेंगे अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो और अगर आप फील करते हैं तो आपके कोई रेलेवेंट इश्यूज़ हो, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. और हमारे अभी टॉपिक चलता रहेगा इमिग्रेशन, लिटिगेशन, रिप्रेजेंटेशन. अभी हम बात करेंगे डिपोर्टेशन के बारे में, हाउ दैट कैन बी हेल्प, उसमें क्या हेल्प हम आपकी कर सकते हैं वो डिस्कस हम करेंगे आपके साथ. और इंशाल्लाह आप ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें. विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स.